which is remaining after this qualifier number 2, and in this out of these two teams, one team will going to get the place in the mega final. So already United Dhaba, they are entered into the final, just waiting for the winner of these two teams, and it's going to be very interesting. So once ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಇದರ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ So opening batters have already made their way to the middle of the ground. The Mithun, being the captain of the side, is a striker, and in the non-strikers and Arshad. It's going to be a very good contest now, and the bowler will go into start the proceedings for the side of Team Rangers. Ilyas is always is the one who's got a successful tournament and from the ball. So one of the good starter as well. So far he bowled very well whenever his opportunity is given. ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ವಿಷನ್ ಇದರ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Well, first run already came here for team ರಾಯಲ್ ವಿಷನ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಇದರ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು, ಹಾಗೇನೆ ರಾಯಲ್ ವಿಷನ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Thank you very much, and thanks to all the donors. You are the one that are responsible for the success of this cricket tournament. Again, we are grateful and thankful for all the donors for this Kateel Premier League. Again, next ball driven that one officially quite safely down to deep long off region. Protection is there in the deep long off region, so that batter have. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. So scoreboard moves on to 2 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Each and every delivery, each and every run in this qualifier number 2 definitely going to be very crucial for both the teams. Again the Ilyas bowling from the commentary box, and right arm around the wicket, left arm, that will be correction over the wicket again. Mithun going for the big stroke in the negation, misses the line completely. Leg by call by umpire. Mithun is not really happy with himself. You know exactly that the ball which is in his scoring zone, isn't it? Ball almost in the little bit on the leg stump, and batsman always want to get the big shot on the onside region, and Mithun certainly just missed that opportunity to swing his bat into that line of the ball. Maybe the ball which is not really coming to the bat, isn't it? Quite understandable under floodlight. It's not so easy for the batter to get the big shot. Again the bowler Ilyas, left arm over the wicket, this time going over the top of the infield, just over the top of the infield. The fielder behind the ball, and before the fielder will go in to collect the ball down at deep cow point region. Ample time for the batter Arshad to complete that couple of runs. With that couple of runs, Kobana moves on to 5 on the board without loss of any wicket. 5 on the board without loss of any wicket means both the batters has got a good ರಾಯಲ್ ವಿಷನ್ ಇದರ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Came into the batsman going for the absolutely going into that mid wicket region. Maybe is trying for, but couldn't manage to get that one into the middle of the bat. Got an inside edge of the bat. Unfortunately, he drags the ball into the stump, and Ilyas strikes with a huge wicket. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So 5 for the loss of 1 wicket. 1 more wicket is back into pavilion. The huge wicket, the wicket of Arshad, is known to be one of the good striker of the ball, but losing him in this condition definitely slight a bit of under pressure now for team Varaha Roopa. But Ilyas, just like I mentioned, Gopi, is a man, is a bowler who really got a very good tournament from the ball. Again in this do or die match, he produced one more very good delivery. Even the batsman little bit early into the stroke, ball which is came late to the bat. That's a big problem when you're playing under floodlight, ball which is not really coming to the bat.
एग्जैक्टली सतीश, इलियास ने इस श्रृंखला में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है और यहाँ पर भी इस क्वालिफायर मैच नंबर 2 में उस सिलसिले को यहाँ पर बरकरार रखते हुए और अंडर फ्लडलाइट्स यहाँ पर गेंद पर नियंत्रण प्राप्त करना बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर उतना आसान नहीं है और परिस्थिति का पूरा लाभ इस वक्त उठा चुके हैं इलियास एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए सतीश. Exactly, in the next ball, right arm over there. Rakshit going for the big shot. Ball is in there for a while, but after one ball is collected by the fielder, here is the batsman turning out for the second run, and they managed to complete that couple of runs quite easily. So Rakshit is straight away off the mark with that couple of runs. And scoreboard numbers on to 7 on the board after completion of over number 7. After losing the toss, the captain of the opposition asked to bat first. Varaha Mangalore managed to score 7 for the loss of 1 wicket. And Gopi 7 for 1. Certainly it's going to be not a huge total, but not a small total. 7 certainly the bat captain of Warara seems to be it was a good start. Even they lost 1 wicket, but 12 deliveries which is remaining excluding wides and no balls, and out of 12 if they manage to get another 15 to 20 runs, definitely it's going to be a good score in this condition. एग्जैक्टली सतीश, अंडर फ्लडलाइट्स अगर 6 रनों से ज़्यादा रिक्वायर्ड रन रेट होता है तो सहज रूप से चेजिंग करने वाले टीम के बल्लेबाजों पर दबाव होता है और चंद डॉट गेंदे अगर खेलते हैं चेजिंग करने वाले बल्लेबाज टीम के बल्लेबाज तो निस्संदेह उन पर दबाव बढ़ जाता है. तो इस वक्त कम से कम 20 के आंकड़े को पहुंचना या फिर 20 के आंकड़े के ऊपर जाना है बल्लेबाज को अगर सामने वाले टीम को अगर दबाव डालना है जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे. Absolutely, Gopi. The Vishwakant is a bowler, the ball sings that one. That is going to be a maximum. Yes, it does. That ball just pitching a little bit short, and the batter, like you already mentioned, the Mithun is a very, very good striker of the ball, and little margin for error. You can't bowl the short pitch delivery to the caliber of a batsman like Mithun, and he just capitalizing that one, just going back. Have a look at the stroke, how deeply he went into the crease, just using the deftness of the crease very well. Of course, it's not that much of shot in it, but he made that ball very short by using the deftness of the crease, just going back, and he's got a very good height as well, and got that one right from the middle of the bat down to deep square leg for a huge 6. It's a much required 6 came from the bat of Mithun, and scoreboard jumps into 13 on the board for the loss of 1 wicket. Vishwakant a little bit under pressure now after that 6, and he bowling right arm over the wicket. Balls this time he lofted, and it's going to be a chance here for the fielder to take the guide off the catch. My goodness, can you believe this? You can't do the mistake in this do or die match. You can't do the mistake because no excuse. You can't, because the Mithun is the batter who got a 6 in the previous delivery. The very good comeback looks like once it looks like, but the Vishwakant is got a big wicket here. But unfortunately, the fielder will not going to support in that occasion. Ball catch which is dropped by the fielder. Right, over the wicket. Ball is lovely, very good comeback here by Vishwakant. Again going for the chance of run out here, and both the batters are completed a single. With that single, score Namuzan to 16 on the board. 16 for the loss of 1 wicket in the over number 2 is in progress. So Rangers, what me and Gopi just mentioning about what the mistake they did in the qualifier number 1, they doesn't want to repeat the mistake. But here is the problem for not only for the batters, but we can see that the fielders a little bit not comfortable under floodlight. It's not so easy to catch the ball. What they're catching in the morning in the natural light. Right above the balls again going for the this time the batsman couldn't manage to get that one from the middle of the bat, and ball went to the hands of short fine leg division. Ample time for the batter to complete the single. With that single, score moves on to 17 on the board. Now I think it's a good score on the board. Varaha, Roopa, Mangalore looks like they got a good score here, because one big shot really changing the momentum of this game. And he's the man. His strike is Mithun, got a 6, and again Vishwakant. Captain to captain. That's a battle between two captains. Now again Vishwakant not really able to concentrate over the line, which is going far outside the line of off time. Punishable not from the batters but from the umpire, and wide call. That Koba Namuzan to 18 on the board. 18 for the loss of 1 wicket. What we are talking about, the battle between these two captains, also experienced and very quality players. Right arm over the wicket. Balls this time going for the big shot. Opportunities created for the cotton ball, and Vishwakant never looks like he will going to drop the catch, and that's the end of Mithun.
Just Gopi, we're talking about the battle between two captain, but unfortunately, at the beginning of the over, the one chance which is missed by the fielder in the deep wide-ish long on, but this time Vishwakant just thinking about, I'm not giving the chance for the fielders himself. I want myself about to get the wicket of Mithun then, and cotton ball which is taken, but maybe think it's going to be too late to pick the wicket of danger man Mithun, because already run switch is in the board, and in each and every run now onwards is going to be a bonus run for the Varaha Roopa Mangalore. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर बदला जो कि ले चुके हैं विश्वा, अगली गेंद पर उन्होंने विकेट प्राप्त किया, तो 19 रन बन चुके हैं यहाँ पर सतीश। 2 विकेट जरूर गिरे हैं लेकिन 18 रन बन चुके हैं। इन हालात अंडर दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव, जैसा कि हमने पहले भी फरमाया। तो यहाँ पर कम बैक करना है, तो गेंदबाजों को इस वक्त एक बेहतरीन गेंदबाजी करने होगी। 7 गेंदें उनकी टीम में, उनकी पारी में बाकी हैं, और उन 7 गेंदों पर इस वक्त बल्लेबाजों पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा गेंदबाजों को। और जहाँ तक सवाल है यहाँ पर टीम का, तो वराहा रूपा का, तो इस वक्त उनके बल्लेबाजों को इन बचे हुए 7 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन यहां पर बटोरने होंगे। 30 का आंकड़ा निस्संदेह उनके लिए बेहतर इस वक्त साबित हो सकता है अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस। Absolutely, Gopi. It's going to be very important. Again, full that one very nicely right in the gap. There the fielder. Fielder will go to cut it off from the deep square leg to the short deep mid wicket region, and meantime it's ample time for the batter to complete that couple of runs. So the batter got a couple of runs. Halfaz is the batter who got a couple of runs. With that couple of runs, Koban moves on to 20 on the board, and over number last is in progress. Imran is the bowler. One more very good cricketer, very good all-rounder for the side of team Rangers, and wait and see how we'll going to restrict the runs in this last over. And Rangers knows that, and as much as run they managed to restrict in the last over, it's going to be so easy for them to when they're going to chase those runs. But here sensible batting which is required for the batters of Varaha Roopa, because after getting a 20 in a remaining 5 deliveries, I already mentioned it's going to be a bonus run. The batter is on strike now. Rakshit is on strike. Rakshit, in the sense as a savior, as if convert Rakshit in English, absolutely it's a savior, and wait and see how we will going to save his team and how we'll going to bat in the remaining deliveries. Right, over the wicket, lovely delivery, beautiful delivery there from Imran. Absolutely, little bit lifting of delivery I want to say, because he's just exploiting the condition very well, hitting that very good areas in that Imran. He knows that the batsman is a little bit aggressive frame of mind, quite deliberately pitching the ball, shortening the ball and shortening the line, not really good ball that one around the range of batsman's strength there. Again, one more full toss delivery, nicely plays it down to deep square leg region for a single. They're looking for the second. In comes a throw from the deep. Batsman is on trouble and is back into pavilion as well. This is all happening in the slog overs, last overs. There is no option at all. Batter have to look for the runs, and by doing that, the batters couldn't manage to reach his home. The one more wicket is back into pavilion now. The Rakshit is the batter, is back into pavilion, but 1 run certainly will be added to total, because for the second run they got a run out, and the total score now 21 on the board. 21 for the loss of 3 wickets back into pavilion. What a fantastic qualifier number 2 is in progress. Each and everyone wanted to know that who will going to be the finalist. After the United Dhaba got a place in the mega final, even the United Dhaba players also, very interestingly, they are watching this match, because they knows that they will going to play against the winner of this match, and it's going to be a very, very interesting match. So after this match, there will be a match for the women's. Ladies match will go into start. So that I request the captain of both the teams, please be reported for the toss. Again, they're going to Mr. Leg Stamp. They're going for the run there, but it's absolutely a suicider. This is absolutely a suicider, isn't it? It's never looks like going to be a run there. But the wicketkeeper knows that it's a wide ball, but they wanted to get another bonus run for that wide. That's why they went for the run. And wicket number 3 is back. 4 is back into pavilion. Safwan is the batter, is the back into pavilion, looks like. Alfaz, I think, the batsman.
Alpha's batter is back into pavilion now. Score remains on 22 on the board. 4 deliveries remaining in this over. Imran little bit struggling to get his line and length. And just like I mentioned, team have to restrict the run. Need to restrict runs, otherwise very difficult for them to restrict the opposition team. Again, Shashi Durga is a new batter in it. Pulls that one down to deep score like region. Ball is in there for a while. After one bounce collected by the fielder, looking for the second. In comes the throw from the deep, but not good enough to stop the couple of runs from this to batter. So that couple of runs scored moves on to 24 on the board. Rangers now knows that 24, and in the previous match also I think it's 24 which is target, but which is managed very well. And again, it's going to be a 3 overs match. It's not a 4 overs match. So that last 3 deliveries remaining in the innings of team Warara. Imran, right over the pulls that one. That will going to be a, oh my goodness, drop the catch again. This is not a good to see that fielders are dropping the catches, because dropping the catch in the sense, Gopi, they're not only they're lost losing the wicket, but a couple of runs, isn't it? That's very important. Along with that drop catch, they're conceding 2 valuable runs. Satish And with that couple of runs, Cover moves on to 20. Just a minute, Satish sir. Yes, ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ದ ಸ್ಕೈ ಫಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಟೌನ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೈ ಫಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಬಿ ಟೌನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ನೋಡಿ. So last ball remaining, scoreboard is 26 on the board. 26 for the loss of the wicket. 5 wickets have already back billion, and last delivery of the innings of Varaha. Imran wanted to restrict the runs. You know that already 26 on the board. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಬಿ ಟೌನ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So run out. ಸ್ಕೈ ಫಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಬಿ ಟೌನ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Thank you very much. 26, which is the total score now. 27 going to be a target for team Rangers to win this match. And it's going to be very interesting, Gopi. And 27 in 3 overs, and asking run rate exactly 9 runs per over. 18 ball, 27 required for Rangers to get the place in the mega final. But now, in this particular match, I want to say, this is going to be a good match, definitely, because it's not a huge score, but not an underestimated score. 27 under floodlight. Certainly it's going to be a lot of hard work is required for the team. Yes, Satish sir, just a minute. ಎಸ್, ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಇದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಟೀಲ್ ಪರಿಸರದಿಂದ ಅವರು ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಕ್ಕಲ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಕ್ಕಲ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಭಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಬ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಭಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಕ್ಕಲ ಸರ್ ಅವರು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾರಲ್ಸ್ ತಂಡದ
ಅಭಿಶೆಟ್ಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ, ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. So 27 target for the team Rangers. The opening batters have already made their way to the middle of the pitch. Is a time to change in commentary box. It's over to Gopi for the further explanation of the match in India. And Gopi 27, what we're talking about, a good total under this condition. But I think the bowlers needs to justify the effort of the batters, isn't it? Because getting a 27 is not good enough, but justifying that 27 is more important for the bowlers. At the same time, Rangers we are talking about, after performing very well, I think they need to perform very well in this match. I request the fielding team, please start the match. We are having a shortage of time. Daimadi fielding team ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. We have a shortage of time now. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश. तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया. यहाँ पर रेंजर्स के लिए एक मजबूत शुरुआत की जरूरत है अगर 27 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है. रिक्वायर्ड रन रेट एक्जैक्टली 9 runs per over. In 3 overs they have to score for victory. 27 runs to qualify for the grand finale of this competition. And let's see can they reach the target or not. Meantime the opener is Imran and Sandy, the openers. Meantime the ball is taken by Arshad, who will be starts the fresh proceedings from the commentator box. And और इंतजार है इस वक्त पहले गेंद का. और देखते हैं यहाँ पर कौन सी टीम इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करती है. यूनाइटेड ढाबा का सामना करने के लिए पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड के साथ शुरुआत कर चुका है इस वक्त गेंदबाज अरशद. और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. एक रन बिना किसी नुकसान के. निस्संदेह जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है इस वक्त वरहा रूपा का जहाँ तक विजय का सवाल है तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट 11 दे हैव टू बोल्ड टाइट बॉलिंग if they have to restrict the batsmen of Rangers under 26 runs in their stipulated 3 overs. और पहले गेंद में तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में एक रन प्रदान कर चुके. अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता. गेंद पहुंची इस वक्त गली क्षेत्र पर. 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. सिर्फ एक सही गेंद इस ओवर में फेंके जा चुके. जस्ट 1 right delivery bowled in this over so far. 2 runs conceded by the bowler and now it's 2 without loss in the first over. तो इस बीच गेंदबाज अरशद गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए अब सैंडी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. फ्लडलाइट्स की झगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध यहाँ पर कर चुकी है. और निश्चित रूप से एक बेहतरीन श्रृंखला यहाँ पर खेला जाता हुआ कटील प्रीमियर लीग 2024 के अंतर्गत 2024 के अंतर्गत क्वालिफायर मैच नंबर 2 की शानदार प्रगति होती हुई. इस बीच गेंदबाज तैयार अरशद. यह गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ. गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर. डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़ कर रहा है. 1 रन मिलेगा. दूसरा रन मिसफील्ड. और इस बीच इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज 2 रन प्राप्त कर चुके हैं. वहां पर एक ही रन हो सकता था और अंतिम क्षण में बल्लेबाज जो फील्डर दौड़ कर रहा है डीप मिड विकेट से गेंद से अपने नजरें हटा ली हड़बड़ाहट में और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई. और इस छूट का फायदा उठाकर बल्लेबाज 2 रन दूसरा रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. अरशद फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार. सैंडी ये गेंद रिवर्स शॉट टॉप एज मौका हो सकता है. फील्डर वहां पर आते हैं डीप कवर पॉइंट पर और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. सैंडी का स्ट्रोक डीप कवर पॉइंट फील्डर को बीट नहीं कर सका. गेंद काफी देर तक हवा में थी, काफी ऊंची उछली थी और एक बेहतरीन जजमेंट के साथ डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर इस कैच को लपका फील्डर ने. और इसी के साथ सैंडी की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है. 4 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है इस वक्त रेंजर्स का. और निस्संदेह सतीश ऐसा कहना पड़ेगा सैंडी का विकेट का गिरना कुछ हद तक ड्रॉबैक यहाँ पर साबित हो सकता है रेंजर्स के लिए, क्योंकि सैंडी ने पिछले मैचेस में बेहतर बल्लेबाजी की थी. तो यहाँ पर उनका विकेट इस वक्त कुछ हद तक मुश्किलों में ढकेल सकता है रेंजर्स के बल्लेबाजों को आने वाले ओवर्स में. Exactly, Gopi. Losing some very
good cricketer like Sandy's wicket in the early stage of the innings is definitely going to be a little bit of back foot for Team Rangers. But I want to say that they got some good players in the side. Losing one wicket means in the sense they lost the match. They lost one wicket, but they're not in lost the match. They can try for the another remaining deliveries. But I think it's a very good breakthrough there from the bowler Usher. They got a huge wicket of the Sandy. But you need to appreciate that fielder as well. Of course, we are just talking about only the bowlers, but the fielder is the one is helping the bowler to pick the wickets because their contribution is more important. We are seeing that so many drop catches in this particular, especially an under floodlight. So the fielder did a great job to pick the wicket. So a lot of best wishes which is coming from even from Bangalore and Mangalore as well. And it's one best wishes came for Safwan of Team Warara Roopa. And door number 301 Bengaluru wishing all the best for Safwan. Again, a nicely driven down to deep backward square leg. They're looking for the second there, but a very, very risky one. I think if they wanted to get a couple of runs, it's going to be very risky because they need to save this man, Gopi, because Imran is a key player for Rangers. If they wanted to win the match, he need to play a responsible innings and he need to take an initiative for Rangers if they wanted to win the match. Exactly, सतीश. यहाँ पर इमरान को एक बेहतर पारी खेलना जरूरी है क्योंकि वो इस वक्त की प्लेयर है यहाँ पर रेंजर्स के लिए. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त वराह रूपा का, तो इमरान का विकेट जल्द से जल्द उनको उखाड़ना होगा अगर उन्हें इस मैच में अपना आधिपत्य प्राबल्य स्थापित करना है. तो देखते हैं यहाँ पर किसकी जीत होती है, बल्लेबाज की या फिर गेंदबाज की. और गेंदबाज अरशद इस वक्त तैयार अपनी ओर के अगली गेंद लेकर बाएं हाथ ओवर द विकेट. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, लेकिन गेंद लगभग उनके घुटनों पर टकराई अंतिम अक्षर में और वहीं पर गिर गए. रन नहीं मिला. डॉट गेंद इस वक्त जुड़ता हुआ और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर और 22 रन और चाहिए विजय के लिए. अब और 13 गेंदें बाकी. 22 runs more required in remaining 13 deliveries. The equation seems to be a stiffer now a little bit for the batsmen of Rangers. और जहां तक चौके और छक्के का सवाल है, कम से कम एक चौका या छक्का इस वक्त रेंजर को काफी हद तक इस मैच में वापस ला सकता है. अरशद फिर से एक बार तैयार. यह गेंद उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर. एक बार फिर से बल्ले पर लेने में असफल. पॉइंट पर गेंद पहुंची. 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रन. 6 for the loss of 1 wicket and first over has been completed. 2 overs remaining in overall calculation. So in remaining 2 overs they have to score 21 runs for victory. और सतीश यहाँ पर पहला ओवर अंडर प्रेशर अरशद ने इस वक्त बेहतरीन प्ले किया जिसमें सिर्फ 6 रन उन्होंने प्रदान किए हैं. Absolutely, it's a very good start because keeping the batsmen like Sandy and Imran to quiet is not easy. And just giving 6 more runs in the first over, I think the bowler did a great job. But still, Gopi, just coming back to the equation, 6 which is directed from 27, that means another 21 more runs required for the victory in 2 overs. Now asking run that is creeping up. It means the 6 runs means they were talking about they got a 6 run, but because of that slow start, the asking run rate is really climbing up, and required run rate now climbing up to 10.50 runs per over, and it's going to be very, very interesting how well the batter will going to get this. This is going to be a very decider over for both the teams. The batting team wanted to get at least 10 to 12 runs, and at the same time, fielding team wanted to one more economical over. एग्जैक्टली सतीश, दोनों टीमों के लिए ओवर काफी महत्वपूर्ण है. रन से ज्यादा बनाने होंगे बल्लेबाज को, जबकि रन ज्यादा से ज्यादा रोकने होंगे इस वक्त गेंदबाज को इस ओवर में. तो देखते हैं क्या होता है. 21 required in remaining 12 deliveries. First ball, मुजम्मिल गेंदबाजी शुरू करते हुए absolutely fantastic delivery this time और स्टंप्स एक्सपोज करते हुए शफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला कटील प्रीमियर लीग 2024 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए और निश्चित रूप से इस सुंदर से मैदान पर आसमान मैदान पर आसमान के मानिक मैदान पर एक बेहतरीन श्रृंखला एक शानदार प्रगति करते हुए और ऐसा कहना पड़ेगा क्लाइमैक्स इस श्रृंखला का यहाँ पर गुजरता हुआ और फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए दोनों टीमों के बीच में कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है. और इस बीच मुजम्मिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस वक्त गेंद को उछाला, इस वक्त गेंद पहुंची पॉइंट पर. रन नहीं मिलेगा. उछालना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से उछाल नहीं पाए और गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर बोर्ड स्टेज एट 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. विद एवरी डॉट बॉल the pressure is now building up on the sides of the batsmen.
और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त मुजम्मिल तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार, काफी लंबा रन अप उनका 10 से 12 कदम, अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद फुल टॉस ऑफ द टॉस, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर, लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया था और एक रन प्राप्त करने में सफल। ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಪು ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಶಫಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫೈಜಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಕ್ಕಳ ಇವರು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶಾಫಿ ಹಾಗೇನೆ ಫೈಜಲ್, धन्यवाद। तो यहाँ पर 3 गेंदें फेंके जा चुके हैं और मुजम्मिल अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट। ಕಟೀಲ್ ತಂಡದ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೇನೆ ಶಿವ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೇನೆ ಶಿವ. And he dropped. Fantastic strike, but dropped by the fielder at deep end wicket. He's got a life. तो इस वक्त रन मिल चुके हैं, एक और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, और मुजम्मिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, और गेंद की परीक्षा करने के बाद इस वक्त बल्लेबाज गेंद को इस वक्त गेंदबाज के हाथों में लौटाते हुए, और मुजम्मिल एक बार फिर से तैयार, और रन है 8, रन चाहिए 19, गेंदें बाकी हैं 8, 19 रन रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 8 डिलीवरीज, 2 गेंदें इस ओवर में बाकी है, और मुजम्मिल कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। और मुजम्मिल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, और इस बीच ये गेंद इस बार फुल टॉस ऑन साइड पर डिफ्लेक्ट किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, और गेंद इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। जरूरतमंद चौका यहां पर लग चुका है इस वक्त, बल्लेबाज इमरान के बल्ले से खूबसूरती के साथ गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया, स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद इस वक्त डीप फाइन लेग सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। 12 रन 15 रन चाहिए, गेंदें बाकी इस वक्त 7, मैच में कशिश अभी भी बरकरार रहा। ಕಟೀಲ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೇನೆ ಶಿವ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶಿವ 12 runs, 15 runs required, 7 balls remaining, and still the Shiva. Still the hopes alive for the batting side now with this boundary, और मुजम्मिल इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इमरान यह गेंद टॉप एज, लेकिन गेंद इस वक्त शायद सीमा रेखा को पार करेगी, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है। इट्स अ बिगी, और इस छक्के के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा रेंजर्स आर नाउ स्ट्रांगली बैक इन द गेम। 9 रिक्वायर्ड, 6 balls remaining, और सतीश अब ऐसा कहना पड़ेगा it could be anybody's game at this situation in this last over. Absolutely, Gopi. 1-6 really changing the complexion of this game, isn't it? And Imran, just like mentioning about he's a danger batsman as far as opposition is concerned. What a great shot that is, Gopi. Nothing wrong with the line of delivery, but he just shuffled across the line of the delivery, got that one right from the middle of the bat, and he got the distance as well. I will mention that getting a distance is very difficult under floodlight, but he got the distance because he's got a muscles power and he got a technique of hitting the ball. It absolutely is if you see that stroke, absolutely it was a very delightful cricketing stroke to watch. Now last over remaining and 9 runs required for the victory, but still match is poised because 9 to get from last over, still a lot of hard work required from the batter, and even the hard work required for the bowler if they wanted to restrict the runs in this last over. बिल्कुल सतीश, अंतिम ओवर 6-9 द इक्वेशन स्टैंड्स फॉर रेंजर्स, और इस वक्त गेंदबाज प्रताप विल बी स्टार्टिंग अ मैच डिसाइडिंग ओवर। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स, और ओवर की पहली गेंद लेकर प्रताप इस वक्त तैयार, लंबे रनअप के जरिए बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए इस वक्त विश्वा, देखते हैं विश्वा इस
इस वक्त क्या करते हैं? क्या पहली गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक खेलते हैं? क्या पहली गेंद पर रक्षात्मक तरीके का खेल अपनाते हैं? देखने वाली बात है। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद प्रताप और फील्डर इस वक्त लॉन्ग ऑफ के थोड़े पीछे भेज दिए गए। ओवर की पहली गेंद लेकर प्रताप इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, रन अप में कुछ हद तक बाधा, एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए, और इस वक्त स्कोर रुक चुका है वहीं पर, यानी गेंद कोई भी नहीं फेंकी जा चुकी है। 9 रन चाहिए, 6 गेंदें बाकी, और प्रताप एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। और इमरान इस वक्त स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज विश्वा की ओर कुछ बढ़े, कुछ कहा उन्होंने कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए। और इस बीच प्रताप ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, यह गेंद हल्के से गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया खूबसूरती के साथ, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, स्ट्राइक रोटेट करने में सफल। वो जानते हैं इमरान को जितना ज्यादा स्ट्राइक मिलेगा उतना बेहतर होगा उनके टीम के लिए। अब 5 गेंदें 8 रन एंड इमरान back on strike and let's see what will happen in this delivery। और देखना यह है कि प्रताप इस वक्त किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर अपनाते इमरान को बांध कर रखने के लिए। जैसा कि मैंने और सतीश ने फरमाया था, इमरान की उपस्थिति इस वक्त रेंजर्स के लिए बेहद जरूरी है अगर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचना है तो यहां पर मौका जरूर है वराहा रूपा के गेंदबाज प्रताप को कम बैक करने का। निस्संदेह चंद डॉट गेंदें इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर दबाव यहां पर बढ़ा सकते हैं। दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स अपनी टीम का मनोबल इस वक्त बढ़ाते हुए तालियों के साथ, सीटियों के साथ, और इस बीच मैच बराबरी पर आकर रुक चुका है। और प्रताप अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, इमरान इज नॉट गोइंग टू फेस प्रताप। 7 से 8 कदम उनका रन अप, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त शॉर्ट गेंद पुल किया इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्राइक। और इस अब ऐसा कहना पड़ेगा यहां पर रेंजर्स अपने विजय के द्वार पर आकर रुक चुका है। और देखिए यहां पर गेंदबाज हताश मनोभाव के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। अब रन से चाहिए 2, गेंदें बाकी है 4। और सतीश, इमरान निस्संदेह इस वक्त एक शीट एंकर रोल, मुख्य सूत्रधार की भूमिका अदा करते हुए, और उनकी इस कड़ी मेहनत मुशक्कत की बदौलत यहां पर उनकी टीम रेंजर्स इस वक्त विजय के द्वार में आकर खड़ा हो चुका है। सतीश, Well, Gopi, absolutely the 2 sixes, only 2 deliveries that really changing the momentum of the game, absolutely. And Imran is the one getting that 2 sixes, and what a great shot, that 2 sixes. Absolutely the quality cricketing throw coming from the bat of Imran, and that's why some players, Gopi, they are very good in playing under pressure, isn't it? They love to deal with the under pressure situation, and Imran is a kind of batter, is always loves to play under pressure. That's why, Gopi, some players recognized by the cricket lovers because of their braveness and their gutsy batting, isn't it? Handling the pressure is more important, and winning the game for the team is more important. Now, just 2 runs required and 4 deliveries remaining, and have a look at the game is changing here, isn't it? At one stage looked like Varaha Roopa, they will going to win the match quite easily after that good start given by the opening bowler. Only 6 runs came from that over, but that 2 sixes, which is good enough from bat of Imran to take his team into the winning track. 2 runs required for the victory. I want to see how many runs Imran is scored. He's batted 19 runs, and that means almost 75% of the runs which came from the bat of Imran. And good thinking, in fact, looks like the bowler has got a little bit of problem here after he was delivered the ball. Looks like a little bit the problem from his left leg. Maybe that the right leg, which is a little bit twisted after he wanted to deliver the ball because of the dew factor which comes into play, and he couldn't manage to grip that one properly. So the bowler will going to continue. 2 runs required, Gopi, and 4 balls remaining. Looks like everything is over, but for another 2-3 deliveries is going to be very important for the team if they wanted to back in the game for team Varaha Roopa. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर 2 रन 4 गेंदें चाहिए, डॉट गेंदे यहाँ पर फेंकने होंगे। गेंदबाज इस वक्त बदल दिया गया है और गेंदबाज हैं रक्षित इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। 2 और 4, हियर वी गो। ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त पैरों पर टकराने के बाद शॉर्ट स्क्वायर लेग पर इस 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड, और दूसरा रन लेना चाहते हैं। और मैं ये नहीं समझ पाया कि बल्लेबाज इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 गेंदें बाकी है, 1 रन चाहिए विजय के लिए, और शायद बल्लेबाज ने इस मैच को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहे। लेकिन इस बेवकूफी में कई मैच टाई पर ना समाप्त हो जाए। अगर 3 गेंदें लगातार टाई होंगे, 3 गेंदें लगातार डॉट होंगे तो शायद मैच टाई हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना एकदम कम है। लेकिन सतीश की क्रिकेट में कुछ भी मुमकिन है जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए, यह एक कहावत है।
Well, Gopi, maybe I have noticed here that Imran is coming to the striker and is the main reason that he is the one changing the complexion of the game. That's why he wanted to finish the match from his bat, and that's maybe the reason that, but otherwise no reason at all. Now last run required for the victory. Wait and see. बिल्कुल सतीश, 3 डॉट गेंद इस वक्त चाहिए, सिर्फ एक रन चाहिए रेंजर्स को इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले में प्रवेश प्राप्त करने के लिए. Here we go, ये गेंद उछाला, इनफील्ड क्लियर करते हैं. That's it. Rangers are through to the grand finale of this competition, defeating Varaha Roopa in a thriller, and with that victory, they are through to the grand finale. So the grand finale match will be played right after the women's match between United Dhaba versus Rangers in the grand finale of Kateel Premier League 2024. So absolutely fantastic match came soon. And Kyo Satish? Well, Gopi, absolutely.